हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ए फ्री हैंड। ए फ्री हैंड, फ्री यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और हैंड नाउन है। ए फ्री हैंड मतलब एक बंधन मुक्त हाथ। बात करते हैं ऑन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड जेम नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई नियम कानून होगी। ए फ्री हैंड ऑन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड जेम नॉर्म्स। आगे देखते हैं। साइंस मस्ट बी अनफेटर्ड। साइंस कैसे होनी चाहिए? एक अनफेटर्ड होनी चाहिए। अनफेटर्ड का मतलब होता है रिलीज, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। साइंस मस्ट बी अनफेटर्ड इफ इट इज टू बी यूजफुल। विज्ञान को उपयोगी होने के लिए उसे बंधन से आज़ाद होना होगा। साइंस मस्ट बी अनफेटर्ड इफ इट इज टू बी यूजफुल। नेक्स्ट, लास्ट वीक द गवर्नमेंट issued a set of orders that scientists have heralded as revolutionary। पिछले हफ्ते सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी करार दिया है। नेक्स्ट है ए मेजर चेंज, एक बड़ा बदलाव। ए मेजर चेंज इज इन अलाउइंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन टू बाईपास द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पे जेम का फुल फॉर्म है द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ए कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव दैट इज meant to prioritize made in India equipment. GEM norms require all government purchases, from laptops to furniture, to be routed through the GEM portal with a mandate to buy from the vendor offering the lowest price. ये जो जेम नॉर्म्स है इसका क्या रिक्वायर करता है? जेम मानदंड यह जरूरी बनाते हैं कि लैपटॉप से लेकर फर्नीचर तक सब सरकारी खरीद जेम पोर्टल के जरिए हो, जिसके साथ यह निर्देश भी है कि न्यूनतम कीमत लोएस्ट प्राइस की पेशकश करने वाले वेंडर से ही इसको खरीदा जाए। While technocrats in government amplified this bypass as a landmark initiative to promote ease of doing research and development, the fact is that until GEM-based procurement was made mandatory from 2020, the default option was to allow individual scientific institutions the freedom to make their choices regarding the vendors they procurement. Take for example sodium chloride, something as common as table salt must be available in infinite supply, and it is only proper that laboratories they require great quantities for its myriad applications in research source it from the supplier who offers it the cheapest. However, much like the avatars of salt, kosher, flat or sea are uncommonly unique to the chef, the differences in purity, even within common salt, are critical to scientific research
as well as the manufacture of pharmaceuticals. This translates to some vendors being more reliable and therefore more preferred. A major aspect of scientific research is about being able to reproduce results of experiments described in publications. Often, अक्सर, this requires fidelity to the methods and materials of the original experimenter. इसके लिए मूल प्रयोगकर्ता के तरीकों और सामग्रियों को लेकर सटीकता की जरूरत होती है. Given the challenge of budgets and the inability to source the right material results in experiments being junked halfway or crimping on experimental ambition, resulting overall in a net loss of resources, time and effort. If this is extended to materials more complicated than salt, precision lattice, customized lab-produced diamonds, biological molecules. For example, it is easy to understand the grief of scientists. It is understandable and pardonable when a government experiments with an untested policy and runs into uncharted waters or unknowns. In the case of gem, it was a known fact that India lacked an industrial base for sophisticated machinery, and it was inevitable that the Humber had policy that saw all products as cookie cutter nails would impede scientific research. Impede का मतलब होता है बाधित. India's scientific ministries are unique in that they are led by scientists instead of the usual norm of having career bureaucrats. This was due to a recognition dating back to the early years of the Republic that while science and technology can be employed to serve the state, science itself is unfettered. Unfettered means release, free, and must be specially nurtured to be useful. A free hand is worth more than two fettered arms.